वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल का स्टडी किया था। देन हमने डिजिटल सिग्नल्स के सिम्बॉल्स देखे थे, मीन्स एग्जांपल। ठीक है। देन एनालॉग सिग्नल के जो पैरामीटर्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम इंटरवल। ओके, तो इस तरह से हमने पैरामीटर स्टडी किए थे एनालॉग सिग्नल के। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नल्स के जो पैरामीटर्स है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल सिग्नल का बेसिक स्टडी किया था। ठीक है, तो ये जो डिजिटल डेटा है विच इज़ इन द बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1, it can be converted into the digital signal, so that is a square wave. Okay, so digital data can be converted into the digital signal. So 0 can be represented as a T off, okay, means flat, and then 1 can be represented as a high, means T on. Okay, so in that way we can represent this digital data into the digital signal. Okay, so this digital signal or digital data has some parameters. Okay, so basically signal has a parameters. So first parameter is a bit interval, that is denoted by TB, T suffix B for bit, or it is also called as a bit length. Okay, so first we will see the definition. The bit interval is the time corresponding to one single bit. So it is a time interval corresponding to single bit, whether it is 0 or 1. तो ये जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस TB between this 0 and when it start towards the high value, that is 1. Okay, so this is the bit interval between 0 and 1. So that is a simply denoted as a bit interval or bit length. Okay, so the bit interval is the time corresponding to one single bit. तो एक सिंगल बिट के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेदर इट इज़ 1 और 0. सो इन केस ऑफ फर्स्ट विल टेक द 0 to 1, so that is a bit interval TB, and that will be the from 1 to this 0. So it is also a bit interval. So the interval for 1 bit means it is 0. ओके, सो मीन्स कितना टाइम आपका सिग्नल फ्लैट है स्क्वायर वेव का, सो दैट रिप्रेजेंट द 0. देन कितने टाइम के लिए सिग्नल हाई है, ओके, दैट रिप्रेजेंट्स द 1. सो दिस एज इज अ फ्लैट एज विच इज अ TB, दैट इज कॉल्ड एज अ बीट इंटरवल. ओके, सो एज शोन इन अबव फिगर, टाइम करस्पॉन्डिंग टू 0 और 1 इज TB. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है जब ये स्विच हो रहा है 0 to 1, सो दैट इंटरवल इज TB, एंड व्हेन इज स्विच फ्रॉम 1 to 0, सो दैट इंटरवल इज योर हाई, मीन्स इट इज अ बीट इंटरवल TB और बीट लेंथ. सेकेंड पैरामीटर विल बी द बीट रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेटा रेट. So first point is bit rate is defined as the number of bits transmitted or sent in 1 second. It is expressed in bit per second, that is BPS. Okay, means number of bit that can be transmitted or sent in 1 second. ठीक है, एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हुए, so that rate is called as a your data rate or bit rate, and it is expressed in bits per second because हम जो टाइम काउंट कर रहे हैं वो 1 सेकंड का है, दैट्स वाई इट्स यूनिट इज इन पर सेकंड. ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन बीट रेट एंड बीट इंटरवल, ठीक है, जो हमने फर्स्ट बीट इंटरवल अभी पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, देयरफॉर बीट रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन बीट इंटरवल. ओके, सो बीट इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीट रेट. व्हेन बीट इंटरवल गोज ऑन इंक्रीजिंग, बीट रेट इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन बीट इंटरवल इज डिक्रीजिंग, बीट रेट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू each other, that's why. Okay, so bit rate is also called as a signaling rate.
सो उसका दूसरा नाम है सिग्नलिंग रेट and it is defined as the number of bits which can be transmitted in 1 second in simple language. Okay, means in 1 second the bits can be transferred, that number will be your bit rate. Okay, or that can be called as a bit rate. This number of bits which can be transmitted in 1 second is simply called as a data rate or bit rate. Okay, so that is the second parameter of digital signal. So the bit rate is explained with the help of one bit stream which is given 0 1 1 0 1 0 0 1. If the bit duration TB, then bit rate will be a 1 by TB. Okay, so 1 by bit interval is equal to bit rate and the bit duration is given TB, so it is 1 by TB. Okay, so the bit duration is necessary equal to the pulse duration. Okay, so this is called as a pulse. Simply square wave is also called as a pulse in another language. Okay, so first pulse is a 2-bit duration, so that is first, that is a pulse, it is a 2-bit 1 and 1. Okay, bit rate is also called as a signaling rate. ठीक है, ये हमने देखा कि उसका दूसरा नेम है सिग्नलिंग रेट एंड इट शुड बी अ हाई एज पॉसिबल. ठीक है, तो बिट रेट जो रहेगा वो हाई रहेगा. दैट्स व्हाई डेटा कैन बी सेंड ट्रांसफर थ्रू द नेटवर्क. So these are the points regarding the bit rate. Next parameter, that is third parameter, is called as a baud rate. So baud rate is the unit of signaling speed. ठीक है, सिग्नलिंग का जो स्पीड है उसको इंडिकेट करता है आपका baud rate और मॉड्यूलेशन रेट और रेट ऑफ सिम्बॉल ट्रांसमिशन. It indicates the rate at which signal level changes over a given period of time. तो यहाँ पे जो changes है सिग्नल में, जैसे फर्स्ट 0 है, then it can change to the 1, again it change to the 0, then 0 0, again it changes to 1. So it indicates the rate at which the signal level changes from 1 to 0 and 0 to 1 for a given period of time. So that is called as a simply baud rate. When the binary bits are transmitted as an electrical signal with two levels 0 and 1, the bit rate and modulation rate, baud rate, are same. Okay, when the bits are transmitted as an electrical signal, just like a electrical signal means sine wave. Okay, in terms of voltage, with two levels 0 and 1. Okay, that is 0 and 1. The bit rate and the modulation rate, that is baud rate, are same. So in that case bit rate and the modulation rate both are same. Next point, note that two levels, that is binary signal, the bit rate and baud rate are equal. ठीक है, तो बाइनरी सिग्नल के लिए जो दो लेवल्स है 0 and 1, द बिट रेट एंड द baud रेट दोनों भी सेम है इन दैट कंडीशन. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इनपुट बिट्स दिए हैं यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0. ठीक है, एंड सेकंड इज द बिट रेट और baud रेट इज 8 baud. ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस दिए, when 0 it changes to the 1. Okay, and after that it is a first change, first bit is 0, then it will change to the 1. Okay, this is 0, this is 1, again there are continuously 3 zeros are there, so that is 0 0 0, so it will be a 0. Okay, then from 0 the bits is shifted to 1, then this level will be changes to low to high, again it is 1 1, so it is a high value, again it will shifted to the 0, that is low value, from high to this low, this will be a 0, again it shift from low to high because the bit can be changed from 0 to 1. Okay, again the bit is shifted from high to low, that is from 1 to this 0. Okay, so that is a baud rate. Each level is being represented by combination of two bits 0 0 or 0 1. The bit rate is therefore equal to the baud rate. Okay.
So that's why bit rate is equal to the baud rate. In this condition it is 8 bits per second, so baud rate is 8 bauds. Okay, so these are the different points regarding the baud rate. Fourth parameter of digital signal is bit length. Okay, so the bit length of digital signal is similar to term wavelength of analog signal. ठीक है, so wavelength is denoted by lambda. आपने फिजिक्स में ये आपका हुआ होगा, ठीक है, wavelength. So the bit length for digital signal is equal to or is term as a wavelength for a analog signal. ठीक है, तो digital के लिए वो bit length है. When we consider signal as a digital signal, it is a bit length, and when we are considering the analog signal, so that term is called as a your wavelength. Okay, in this way. Second point, the bit length of digital signal is defined as the distance corresponding to one bit on the transmission medium. It is measured in meter or centimeter. These are the unit. Meter and centimeter are the units of bit length. ठीक है, सो द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू वन बिट, एक बिट में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ बिट लेंथ. इट इज योर बिट लेंथ. ओके, एंड दैट कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर और इन मीटर्स. देयरफॉर फॉर्मूला फॉर बिट लेंथ इज इक्वल टू प्रोपोगेशन स्पीड इनटू बिट ड्यूरेशन. ठीक है, सो जो जिस रेट से डेटा प्रोपोगेट होगा थ्रू अ मीडियम मल्टीप्लाई बाय duration of bit. Okay, so we are putting the its unit propagation speed is meter per second multiplied by bit duration is measure in second, so it is meter divided by second into second. Okay, so that's why second get cancelled, so the unit of bit length is in meter. Okay, so in this way these are the different parameters of digital signal. So next topic is there are some important definition regarding the digital signal. First one is the channel capacity. Okay, so जो ट्रांसमिशन चैनल है, ठीक है, तो उसका एक कैपेसिटी होता है. सो दिस टर्म इज रिलेटेड टू द दैट इज द चैनल कैपेसिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. So first point, the channel capacity is defined as maximum data rate at which the digital data can be transmitted over the channel reliably. ठीक है, मीन्स ये एक्चुअली क्या ट्रांसमिशन मीडियम का कैपेसिटी डिनोट करता है. ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही चैनल कैपेसिटी. सो इट इज़ द मैक्सिमम डेटा रेट, कितना मैक्सिमम डेटा रेट से डेटा सेंड हो सकता है थ्रू दैट ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली channel capacity. ठीक है, without any distortion. means suppose there is a sender and receiver pair is there. Sender wants to send a message to the receiver. Okay, so it requires the medium, whether it is a wired or wireless medium. So the speed at which the data or this message will be transferred to the medium without any distortion or reliably, so that is called as the capacity of that channel, and it is denoted by capital C. Second point, there are other concepts related to the channel capacity are data rate, bandwidth, error rate and noise. ठीक है, so these are the terms related to this channel capacity. ठीक है, then we will see one by one. First one is the data rate. It is defined as the number of bit transmitted by transmitter per second. ठीक है, तो ये जो सेंडर है या सिंपली पेयर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ट्रांसमीटर इज डिनोटेड बाय TX and receiver is denoted by RX. Okay, so the number of bit transmitted by transmitter per second. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिट होंगे थ्रू अ ट्रांसमीटर पर सेकंड, so that is the data rate. It indicates how fast signal can be transmitted reliably over the given medium. ठीक है, तो कितने स्पीड से जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है या मैसेज है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम. दैट मीडियम can be a wired or wireless medium, so that is represented as a
data rate. Okay. Second point, this capability depends on the some factor. First factor is the amount of energy put into transmitting each signal. ठीक है, तो उसको कितना एनर्जी और एज अ इनपुट प्रोवाइड किया गया है टू ट्रांसमिट ईच सिग्नल. ठीक है. सेकंड वन, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल. ठीक है, तो ये जो मीडियम है या जो मैसेज है वो कितना डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस उसको ट्रैवल कराना है. ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड है डेटा रेट. थर्ड, नॉइस, बिकॉज जब भी मीडियम यूज़ होगा so there is the introduction of noise. Okay, external noise, that is for wireless or as well as wired medium also. In both the case noise has a effect. Okay, तो वो भी अफेक्ट करेगा डेटा रेट पे. ठीक है. एंड लास्ट वन इज़ द चैनल बैंडविड्थ. तो जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होगा, ठीक है, तो उसका एक कैपेसिटी होगा. इट हैज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटी. ठीक है, मीन्स मैक्सिमम उसका डेटा रेट कितना हो सकता है एंड मिनिमम उसका डेटा रेट कितना रहेगा. सो इट हैज़ सम कैपेसिटी, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली चैनल बैंडविड्थ. वो देखेंगे हम आगे. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स on which the capability of data rate will be depend. The next topic will be a channel bandwidth. The bandwidth of communication medium should be a large enough to transmit the digital signal reliably. ठीक है, तो जो bandwidth होगा ट्रांसमिशन मीडियम का, ठीक है, तो वो आपका लार्ज होना चाहिए टू ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल रिलायबली. मीन्स अगर जैसे मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ inputs at the input end. Okay, so these are the inputs and only one output. So in case of channel there are number of channels at the input. Okay, and there is only one transmission medium, so each channel will transmitted through this transmission medium one by one, because suppose there are 100 of inputs and the capacity of channel will be only 50 per second. Okay, so only 50 signals can be transmitted from input to the output. ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट में मक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर में डी मक्स. ओके, so that's why the bandwidth of this transmission medium will be a large enough to handle the traffic of the input signal which is at the multiplexer. Okay, or at the transmitter. So it is a transmitter and it is a receiver, because at the transmitting end there is a multiplexing process, at the receiving end there is a demultiplexing process which is just opposite to the multiplexing. ठीक है, तो इस तरह से जो कैपेसिटी है या बैंडविड्थ है, ठीक है, चैनल का, वो लार्ज होना चाहिए. सो सेकंड पॉइंट, एन इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशिएंट बैंडविड्थ विल डिस्टॉर्ट द सिग्नल एंड इंट्रोड्यूस द एरर इन द रिसीव सिग्नल. ठीक है, अगर आप डिजिटल सिग्नल सेंड कर रहे हो सपोज एट द इनपुट एंड, ठीक है, इट शेप लाइक दिस. ओके, प्योर स्क्वायर वेव. अगर ये आप ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे हो एंड चैनल का जो बैंडविड्थ है वो क्या है, नैरो है, सो इट इंट्रोड्यूस द डिस्टॉर्शन जस्ट लाइक दैट. ठीक है, so there is a change in the shape of the signal at the receiving end. Okay, so that may be a error. Next point, noise. This is the average level of noise over the communication path, because noise will be get added in the transmission medium when the signal get transmitted through the transmission medium. The unwanted signal, noise is nothing but the unwanted signal which can introduce in the original message signal or in information signal, and it will distort our original signal and introduce an error also at the receiving end. And next one is the error rate. So it is defined as the rate at which errors occur in the receive signal. ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट है कि कितने रेट से एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है, इन द रिसीव सिग्नल. So that rate is called as a your error rate.
So these are the some important definitions regarding the channel capacity. Next syllabus topic is data rate limit. Okay, so first point is in data communication a large data is required to be transferred from one place to the another. So जिस तरह से अभी डेटा का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो इन डेटा कम्युनिकेशन the size of data will be a large one. Okay, that's why it can be transferred from one place to the another. Second one, it is necessary to transfer it is as quickly as possible. So जो अभी जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो उस हिसाब से जो डेटा है उसका जो ट्रांसफ़र रेट है इट कैन बी एज फास्ट एज पॉसिबल. सो इन अदर वर्ड डेटा रेट in its bits per second over a channel should be as high as possible. ठीक है, तो डेटा रेट जो है वो बिट्स पर सेकंड में बीपीएस में काउंट होता है, अभी हमने देखा. ठीक है, सो इट विल बी एज हाई एज पॉसिबल. जैसे केबीपीएस तो अभी स्मॉल हो गया. ठीक है, उसके बाद एमबीपीएस, उसके बाद जीबीपीएस गीगाबिट्स पर सेकंड. ठीक है, सो जो रिक्वायरमेंट वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है. ठीक है, इस तरह से केबीपीएस आया, फिर एमबीपीएस, देन जीबीपीएस. ठीक है, एंड जो स्टोरेज कैपेसिटी वो भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, पहले जीबी में आता था, अब टेराबाइट्स में आने लग गया है ना. तो इस तरह से जिस तरह से रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही डेटा का, तो उस हिसाब से डेटा कम्युनिकेशन भी क्या हो रहा है, फास्टर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, द डेटा रेट इज़ डिसाइडेड बाय द following factors. So there are some factors on which data rate will be depend. First factor is the maximum bandwidth. तो जैसे हमने देखा कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है it has the maximum bandwidth, means number of channels can be passed efficiently at a time through this channel without any error or changes in the shape of signal. ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि इनपुट में हमने स्क्वायर वेव दिया है, अगर आप चैनल का जो बैंडविड्थ है वो अगर नैरो है, सो इट विल चेंजेस द शेप इन द इनपुट सिग्नल, सो दैट कैन नॉट बी हैपन. सेकंड, द सिग्नल लेवल, एंड थर्ड वन इज़ द नॉइस प्रेजेंटेड बाय द चैनल. तो जो नॉइस का इफेक्ट होगा इन द चैनल दैट कैन बी ऑल्सो मिनिमम. सो दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डेटा रेट और विच कैन डिसाइड द डेटा रेट. नेक्स्ट पॉइंट, two theorems were developed to calculate the data rate. First one is the Nyquist theorem and second is the Shannon theorem. ठीक है, so these are the different points related to the data rate limits. तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसमिशन इम्पीडिमेंट्स, ये एक न्यू टॉपिक या न्यू कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, so thank you.